कोप्पल में वजीर शरण प्रकाश पाटिल ने राम मंदिर की माली बदउनवानी पर सख्त बयान दिया। इन्होंने कहा कि राम मंदिर की रकम की लूट इस मुल्क के लिए एक बहुत अफसोसनाक मामला है। बीजेपी चाहे किसी भी तरह इख्तिदार में आई हो, लेकिन इसने आवाम के एतमाद को नुकसान पहुंचाया है। इल्ज़ाम है कि हिंदुत्व के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर इख्तिदार में आई मोदी हुकूमत के दौर में राम मंदिर की तामीर की रकम में घपला हुआ है और मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इन सब ने अपने अपने दौर में मंदिरों को लूटा। इन लोगों को हिंदुत्व से कोई सच्चा लगाव नहीं, वो सिर्फ हिंदुत्व के नाम से सियासत कर रहे हैं। राम मंदिर की तामीर के लिए पूरे मुल्क के लोगों ने डोनेशन दिया था और कांग्रेस कभी भी राम मंदिर के मामले में अदालत नहीं गई। सिर्फ चंदा ही नहीं, बल्कि राम मंदिर की तामीर के लिए भी जमा की गई रकम लूटी गई है। बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद इस रकम से माला माल हुए हैं। इन्होंने सवाल किया कि वजीर आज़म मोदी इस मामले की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। ये हुंडी की रकम का मामला नहीं, बल्कि आवाम से जमा किए गए चंदे की लूट का मामला है और हुक्मरानों ने आवाम की रकम लूटी है। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट में करानी चाहिए। सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि आवाम का भरोसा भी लूटा गया है। इसलिए ऐसे लोगों को आवाम के सामने अखलाकियात की बात करने का कोई हक नहीं। क्या आपके ख्याल में बीजेपी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी में कोई फ़र्क नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೋದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಎಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗಲ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀ ಇದು ರಾಮನ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ತನ ಅಲ್ಲ, ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೇನೋ ಕೂಡ ಏನು ಜಮಾ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಹೊಡೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, RSS ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದು ತಯಾರಿಲ್ಲ? ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, RSS ಅವರು, BHP ಅವರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ ಹುಂಡಿ ಲೂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು BJP ನಾಯಕರು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಹಣ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.